की वीडियो में एज यूजुअल हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में। सब I'll give you some sort of information. We will go back test all the things that we have done recently और हमारा प्रोस्पेक्शन हमारा प्रोडिक्शन मार्केट को लेके क्या था, किस तरीके से वो प्ले आउट हो रहा है, and are we making any sort of money or not. So we will talk about that, or are we getting any more opportunities inside the market for today or for the upcoming days. I'll also gonna let you know about that. So without skipping any part of this video, do make sure to watch the video till the end, because every single information that I provide you on this video is very authenticated, guys. It's very pure. So do make sure to like the video and share this video with your friends. Alright guys, without wasting any more time, so this is, as usual, we've been talking about this chart pattern for very many days. It is a head and shoulder pattern which had already given us a breakdown. Now if this was a valid pattern, as we have talked about it, अगर ये एक valid pattern है तो हमको क्या देखना है, हमको देखना था कि एक rejection, like if the price came down we should have come up, and then we have seen a rejection, from the zone, and we might have dumped hard from the zone, right? But this is not the case at this point. We also consolidating inside this bear flag, but the chances of going upside were pretty high, as I have told you earlier. Okay, तो considering that market उसी तरीके से play out हो रहा है, और ये हमारे कल की जो अपडेट थी, मैंने कल आपको इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये मार्केट ने एक डाउन साइड फेक आउट दिया है, इसके बाद अच्छा पोटेंशियल अपसाइड मूवमेंट मार्केट में आ सकता है. एंड इफ़ यू वांट टू सी, दिस इज़ द प्रीवियस वीडियो, आई विल जस्ट, so this was yesterday's video. So what we have got is we have got multiple supports from the zone, but after that, once we have got a fake out, okay, because many people would be trying to short the market, and सब लोग यही पैटर्न को देखते हुए आ रहे होंगे, एंड दे माइट बी थिंकिंग कि एज सून एज जैसे ये ब्रेक डाउन होता है वहाँ से हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करेंगे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड एज सून एज like it did get a breakdown, so eventually here, or some of them might gonna have. तो ये चीज़ मैंने आपको कल ही बता दी थी कि we can see this kind of pump inside the market, and already we have seen that, and after which we have got impulsive move inside the price of Bitcoin for up to 3% straight. Okay, so whoever have tried to grab the opportunity and whoever had लॉन्ग देयर बिटकॉइन विथ जस्ट अ टाइट स्टॉप लॉस, इसके बारे में भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया गाइस. सो इफ़ यू विल गो वॉच द वीडियो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, ये ट्राइंगल पैटर्न को मैंने और अच्छे से फॉर्म किया हुआ है इन अनदर चार्ट. आई एम गोना टेक यू ऑन दैट चार्ट इन अ बिट, बट फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट सम मेजर की लेवल्स दैट वी नीड टू कंसिडर बिफोर स्टेपिंग अहेड. ओके, सो अगेन बिटकॉइन क्या कर रहा है, इसी लेवल के पास आके एक रिजेक्शन लेने की ट्राई कर रहा है. ओके, बट एवरी टाइम दर वेन एवर वी आर, दिस वॉज द हार्ड रिजेक्शन, दिस वॉज ऑल्सो अ गुड रिजेक्शन, बट दिस वॉज अ प्रीवियस resistance level that was acting as a resistance for Bitcoin, which has already been broken. Okay guys, now again it's trying to retest, and on the other side we can see that there is a good move inside the price of and the volume as well. So when the volume and the price goes side by side, in this case we can see, yes, that we can still expect the price can consolidate here, and then we can see a good upside movement inside the price of Bitcoin. This is what I'm expecting right now. Okay, and what could be the possible targets if we see this kind of breakout inside the price of Bitcoin, then this could be the possible targets of nearly around the range where we have another resistance nearly around 28,000. So the 28,000 to $28,200 is going to be very important level where we can see our next resistance area. This is what I'm expecting right now. All right, and if we see a rejection and if it is a fake out, then we will be looking for again a dump inside the price of Bitcoin. But we need to first clear this zone. So we have multiple zones of resistance right now inside the market, okay, that we need to clear up. For some reason it's not going. Okay, so probably this is the thing, and on a weekly time frame I'm also going to let you know that we have 200 moving average support.
so which will act as a support, and we would not be able to cross below it. I don't know, my indicator is not working at the moment, so I would be able to show you more of it. Anyway, so this was all about Bitcoin, and on a 4 hourly time frame, we were talking about the falling wedge. We were talking about कि मार्केट ने बॉटम के बाद एक इस लेवल के बाद अपसाइड मूवमेंट के लिए पोटेंशियल दिखाना शुरू कर दिया. नाउ आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट चार्ट, that is Bitcoin chart on an hourly basis. Okay, because this is the major thing that we are looking out inside the market. Based on that, we are taking our longs and short opportunities. I have many altcoin setups right now that are ready with me. Okay, so first thing first that we need to understand right now inside the market is going to be Bitcoin. Bitcoin had given us impulsive breakout this morning. So Asian time zone we have got this breakout, and जैसे ही breakout होता है तो हमको एक जो न्यू ट्रेड्स लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप ब्लाइंडली कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले सकते until you are not getting a good retest, or you cannot, if you have taken your entry right here, then it's possibly a good long position. Okay, so now which are the levels, आपको चाहिए तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट करके रखो अभी के अभी. ओके, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट कर लो. लेवल्स चार्ट्स पे है, तो जो सपोर्ट का अभी के लिए लेवल है, जो अभी जिस लेवल से अभी बाउंस हो रहा है, मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका था. यहाँ से यहाँ तक मैंने 100% का प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर दिया है विद अ क्विक शॉर्ट स्कैल्प. एंड now eventually I'm also building up my long positions inside the alts. This is my game plan for right now, and I believe we have tested this resistance area multiple times. Okay, this was a support, broken, resistance, and I believe again it is acting as a resistance, maybe consolidation, then a break upside, maybe a consolidation to the downside, and then a break upside. This is what I'm expecting from the market right now. Okay, अगर ये एक impulsive downfall होता है मार्केट में, तो in that case I will eliminate my alt positions, and I am looking for very good entries right now, जिसमें अगर हम ट्राई भी करेंगे अगर लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करने का, तो हमारा जो एसएल होगा वो बहुत कम होगा. जिन लोगों ने भी इसको देख के यहाँ पे जिसने भी लॉन्ग किया तो ब्रेक इवन पे आ गए. तो गाइज वी हैव टू वेट फॉर द राइट मूवमेंट. ओके, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे सिग्नल्स देंगे, डेली बेसिस पे ये करेंगे वो करेंगे. मैंने इथेरियम की ट्रेड और बिटकॉइन की ट्रेड को अपना होल्ड किया. एक ही ट्रेड में से मैंने $3,000 का प्रॉफिट किया है, दूसरी ट्रेड में से मैंने $1,000 का प्रॉफिट कमाया. गाइज इफ़ आई विल कीप ऑन रशिंग इनसाइड द मार्केट ऑन डेली बेसिस, मेरी फीसेस इतनी सारी कट जाएगी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अंडरस्टैंड करनी है. अगर आप अच्छे से ट्रेड करना चाहते हैं, क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो, कोई भी चीज़ को अच्छे से ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके पास एक गेम प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से आप उसको ट्रेड करेंगे. यू आर नॉट हियर टू रश इनसाइड द मार्केट. इफ यू might be trying to trade in this zone, you are supposingly going to get liquidated soon or later. guys, मैंने अपनी लॉन्ग की पोजीशन कहाँ बिल्ड की, यहाँ मार्केट एक ही बार उसके पास उस जोन पे आया, मैंने फिर भी उसको बंद नहीं किया. यू नो व्हाट, आई हैड दिस कन्विक्शन. अगर स्टॉप लॉस भी मेरा हिट होता ना तो इट वॉज बी वेरी नॉमिनल. गाइज, सो वी हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज, एंड इफ यू विल ट्राई टू इमर्ज विद ऑल ऑफ द टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल्स, तो आप कहीं से भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे. एक अच्छा मेंटर को पकड़ो और उसको फॉलो करो, एंड देन यू वुड बी एबल टू मेक अ गुड सम्स ऑफ प्रॉफिट. ओके, सो दिस वाज द लेवल्स. Current support for Bitcoin is $27,190 to $27,000. Next support area is probably going to be where it's going to be perfect retest, but I don't believe if this is going to happen, then the market structure could also go bearish and go lowish. So in this case मैं मानता हूँ कि 27,000 से एक अगर बाउंस बैक मिलता है, यहाँ कंसोलिडेट होता है 27,000 से लेके 27,500 के बीच में कंसोलिडेट होता है, और देन वी कैन सी अ ब्रेकआउट. इन दैट केस इट विल बी वेरी गुड फॉर द मार्केट. ओके, कमिंग अप विद द नेक्स्ट. कल मैंने आपको एक ट्रेडिंग कल मेरे वीडियो में मैंने आपको ये सेटअप बताया था. ठीक है, तो व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. गाइस, ये आप 15 मिनट में देखो, मुझे एक परफेक्ट ब्रेकआउट दिखा. ओके, परफेक्ट ब्रेकआउट. मेरा स्टॉप लॉस देखो तो कितने पॉइंट्स का है. मैं इसके हेल्प खुद लेता रहता हूँ. आई ट्राई टू प्रोवाइड यू विद मोर कन्विक्शन, मोर बेटर एंट्रीज, और जिसमें आपको टारगेट ज़्यादा हो. समटाइम्स आई टेक हायर लेवरेज,
जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स को, बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता. सो इसमें अगर आप मेरा लेवरेज अगर 100x की लेवरेज है तो 0.44, ओके. तो इन दैट केस आई विल बी लूजिंग आउट माई 40% of my capital on that trade. For example, if I'm investing $100, I'll be losing $40. ठीक है. और मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ अब आप देखो. ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो देखो, मेरा ये टारगेट था 2.92% का, नियरली अराउंड 300% का प्रॉफिट कर रहा हूँ. अगर मैं $40 रिस्क कर रहा हूँ तो सामने मुझे $300 का प्रॉफिट भी मिल रहा है गाइस. तो जब आप इस तरीके से रिस्क रिवार्ड लेके चलोगे गाइस, यू विल बी इन एन इमेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. एंड इफ यू वांट टू लर्न हाउ आई ट्रेड, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड माई ट्रेड्स, आई विल श्योरली गोना बी स्टार्टिंग अ सीरीज एज वेल. The paid will be after some time, but for now I believe community needs my help. और श्योरली आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग मुझे मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे और आप लोग अगर अपना प्यार दिखाएंगे तो डेफिनेटली गाइस मैं आपको फ्री में वो चीज़ें सिखाऊंगा जो जिससे मैं इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ डेली बेसिस पे. ओके, सो डू मेक श्योर टू शो योर लव इन द कमेंट सेक्शन. लेट मी नो व्हाट आर योर ओपिनियंस and what do you think about the market. Am I right or am I wrong? Whatever it is, I'll see you in the next video guys. Bye bye.